Hello and good morning. Welcome back once again to Easy English Explanation by Pooja Joshi. So here we start with the chapter 6, the 100 Dresses part 2, 10th standard NCERT first flight book of first language English. So you have seen that this story was divided into two lessons, two chapters, that is 5 and 6. So we have already completed the 5 chapters in various videos that are the subparts. Now let's see the 6th lesson. We had already seen that Vanda Petronsky had a strange name according to other girls, especially Peggy and Maddie, and she was teased and made fun by the others, especially Peggy, by asking that how many dresses she had, and to that she replied that she had 100 dresses. And let's see further that what happens in this lesson, where they be able to be friends with Vanda Petronsky again, and will Vanda Petronsky come back or not, and will everything be sorted out, what will happen. Let's see in this first video or the first subpart of चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2. यहाँ पे 5 और 6 लेसन्स में ये स्टोरी दी हुई है, जो एक सेम लॉन्ग स्टोरी है. इट्स वेरी इमोशनल, हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी है. वेंदा पेट्रॉन्स्की, जिसका नेम थोड़ा अलग लगता है और वो थोड़ी चुप चुप भी रहती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक अमेरिकन पॉलिश गर्ल है जो कि दूसरी कम्युनिटी कहलाती है. तो इसकी वजह से सबको उसका नेम भी डिफरेंट लगता है, और वो पुअर लोकेलिटी से है. रोज़ एक ही ब्लू फेडेड ड्रेस पहन के स्कूल आती है, और जब उसे पैगी पूछती है और लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तब वो जवाब देती है कि 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं. तो अब क्या होता है, फिर से अब ये लोग दोस्त बनेंगे, क्योंकि अब ये वेंडा पेट्रॉन्स्की को क्लास में कंपटीशन में वो फर्स्ट आई है. उसने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं. शी हैज़ मेड डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस, ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेसेस, एंड शी हैड won the contest of drawing and coloring. So now let's see what happens. But she is absent from school since few days. कुछ दिन से वो स्कूल में नहीं आ रही है. कलरिंग और ड्राइंग कंपटीशन जीतने के बाद अब वो स्कूल में दिखाई नहीं दे रही. उसे पता है कि नहीं पता है, ये भी सबको नहीं पता है. तो चलिए देखते हैं कि वह पैगी और मैडी से फ्रेंडशिप कर पाएगी अगेन, वह सब मिल पाएंगे. देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, सब ठीक हो जाएगा और फिर से स्कूल में आने लगेगी या नहीं, क्या होता है देखते हैं आगे. लेसन नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के फर्स्ट सब वीडियो में. As usual, you will get in this video the regular reading of the lesson as well as the word meanings, vocabulary in an easy way, and then the explanation will follow. पहले आप देखेंगे reading, उसके बाद word meanings और explanation of word to word, line to line in English as well as Hindi. इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आपको इजीली लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस वीडियो में. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped, the room was still and quiet. Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. यहाँ पे सेकेंड पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है. लेट्स सी इफ देर इज एनी वर्ड मीनिंग. थॉटफुली, थॉटफुली मीन्स थिंकिंग, गिविंग अ डीप थिंकिंग. Then shuffling of feet, that making the noisy movements. Okay, then let's see the meaning. While the class, they were taking a round, as Miss Mason asked the class to take a round. Then in the previous chapter, as we had seen, the monitor from principal's office
there was a letter, and that letter was given to Miss Mason. It was a note. Then she read it several times and she studied it thoughtfully, and then she clapped her hands. She clapped her hands to make the students attentive and come back to her. Attention class, everyone back to their seat. यहाँ पे जब क्लास चक्कर लगा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं वेंडा की ड्राइंग्स, वेंडा पेत्रोंस्की की ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, तब मॉनिटर क्लास प्रिंसिपल के ऑफिस से उन्हें मिस मेसन को, उनकी टीचर को एक नोट देते हैं जिसे वो बार बार पढ़ती हैं, कई बार पढ़ती हैं, और काफ़ी अच्छे से सोच विचार करके वह तालियां बजा के अपने स्टूडेंट्स को ध्यान अपनी ओर खींचती और उन्हें अपने सीट पर बैठने के लिए कहती है. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." When everybody had arranged in their seats, they had taken their seats, and Miss Mason told them about the Vanda's father had written a letter, a small note to them, and which Miss Mason wanted to read out to the class. जब सब शांत हो जाता है, अपनी अपनी जगह सब ले लेते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं, तब मिस मेसन कहती हैं कि मेरे पास मिस्टर पेत्रोंस्की का, वेंडा के फादर का लेटर आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. See the word meanings first. Expectant means showing or having an excited feeling. Having excitement feeling. Then deliberately means purposely. Then listened closely means listened with attention. Listened closely. Okay, let's see now the meaning of the paragraphs. Miss Mason, she stood, and then the silence grew more and more deeper because everybody was worried that, and everybody was expectant, everybody was ready to listen. They had an excitement that what Vanda's father may have written in that letter, and especially after seeing the behavior of Miss Mason, students were worried and they were tense, and they were more and more excited to know about the letter. And Miss Mason's manner also indicated that there was something very important and serious. So everybody listen closely means listen with attention. यहाँ पे क्या होता है कि मिस मैसन के बिहेवियर, उनके तरीके से बच्चों को पता चल जाता है कि ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस बात है. सब टेंस हो जाते हैं और सब सोचते हैं कि क्या होगा. वह उनको एक एक्साइटमेंट होती है, वह जानना चाहते हैं कि लेटर में वेंडा के फादर ने क्या लिखा होगा, मिस्टर पेत्रोंस्की ने क्या नोट भेजा होगा. तो बहुत ही ध्यान से सब सुनना शुरू करते हैं जब मिस मैसन नोट रीड करती हैं. Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to a big city. No more holler Pollock. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. तो यहाँ पे फर्स्ट सी द वर्ड मीनिंग्स.
Holler Pollock means to the Polish people. This is an insulting word, or we can say a bad word, criticizing word for Polish persons. Yes. So here Vanda's father says that now my Vanda and my Jack, maybe Vanda's brother, they both will not come to school now, and they were moving to a big city, and in big city there are lots of funny names. So my Vanda will not be teased for the funny names. That much Jan Petronsky, Vanda's father, had informed in the note कि अब मेरी बेटी स्कूल में नहीं आएगी और जेक भी नहीं आएगा, शायद उनका बेटा, क्योंकि हम लोग अब एक बड़े सिटी की में जा रहे हैं और जहाँ पर और भी फ़नी नेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी नेम्स होते हैं। तो अब मेरी बेटी को, हमारे बच्चों को कोई नहीं चिढ़ाएगा कि उनकी नेम्स फ़नी हैं। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. Here, let's see if any word meanings. No, it's very easiest words paragraph is there. Deep silence met the reading of this letter. Children were very silent and they didn't speak a single word. Miss Mason, she took off her glasses, she blew air on them to clean them up, to wipe them up, and then she rubbed and wiped the glasses with her soft and white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. And when she spoke in a very low and maybe dull voice. यहाँ पर एकदम साइलेंटली, एकदम चुपके से, चुपचाप सब पूरा क्लास, जब ये लेटर पढ़ा जा रहा होता है, क्लास एकदम चुपचाप होता है। मिस मेसन अपने ग्लासेस, अपने चश्मे, अपने कांच उतारती हैं, जैसे कि चश्मे पहनने वालों की आदत होती है। उस पर थोड़ी साफ़ करने के लिए उस पर थोड़ी फूंक मारती है, जैसे हवा के लिए, जिससे कि उसके बाद वो अपना कांच साफ़ कर सकें। अपने एकदम सॉफ्ट सफ़ेद हाथ के रुमाल से अपना ग्लासेस साफ़ करती हैं। उसके बाद वह वापस अपने कांच लगा के, अपने चश्मे लगा के वह क्लास की तरफ देखती हैं और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती हैं। उसके बाद वो बोलना शुरू करती हैं। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long, unfamiliar one. Here she says that purposely and deliberately means intentionally. जानबूझ के और intentionally. Purposely, intentionally. Okay, so let's see the meaning. टीचर बोलना शुरू करती हैं। टीचर बोलती हैं कि आई नो कि not any one boy or girl have deliberately made fun of Vanda Petronsky's name because her name was supposed to be very long and unfamiliar, not very known to all. कि उसका नाम थोड़ा लंबा और थोड़ा अलग या अजीब था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी ने रूम नंबर 13 में कोई भी बॉय या गर्ल ने उसे परेशान किया होगा या उसका दिल दुखाया होगा. वी शुड नॉट एक्चुअली चिल्ड्रन हर्ट एनीवन's फीलिंग्स even if her or his name is long or unfamiliar one. I prefer to think what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. Here teacher says that she gives the preference to thinking that children may not have done it
knowingly or intentionally, but everything what they may have teased Vanda, they must have teased in thoughtlessness. They may not have thought that Vanda would have felt so bad. And teacher says that all of you should think that this is a very unfortunate thing. Unfortunate thing means unlucky. It's not only unlucky, it's a sad thing. And teacher asks that everybody should think about this matter. So what happens here? यहाँ पे टीचर कहती है कि मुझे लगता है मैं ये सोचना ज़्यादा पसंद करूँगी कि किसी ने भी कुछ अगर उससे कहा होगा उसके नाम के बारे में, तो वह जान के नहीं कहा होगा, उसे दुखी करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कहा होगा, पर ये गलती से उनसे ऐसा हो गया होगा, या उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होगा कि वह इतना सीरियस ले लेगी वेंडा पेट्रोन्स की। पर किसी भी तरह से ये बात बहुत ही अनलकी और बहुत ही सैड है। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और क्लास को इसके बारे में सोचना चाहिए। टीचर ने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पर अब ये हुई है तो इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। With this, I would like to end my first sub video, that is first video of the lesson number 6, The 100 Dresses Part 2, First Flight 10th Standard book. Please be safe at your homes and take good care of yourself. Do regular washing of hands off and on. Till then, bye bye. See you.